So let us come to the last of the exercise among article, and that is visual. Visual input क्या है? Let us do one question as an example. You see a picture here where a teacher in front of a building is sitting along with the students, surrounded by students. Students are sitting around him and he is holding a book and is trying to read something. That is the picture. Now what is the question? The question is a statement first. And the statement is according to 2011 census. Census मतलब क्या होता है? Now again you will be in problem if you do not know the meaning of the word. So again a warning to you to learn words every day. Census मतलब जनगणना. According to 2011 census, illiteracy rate of 100% of around has not been by only a couple of states in India. जो literacy rate है वो जो हमने पाया है अच्छा रेट वो बहुत कम राज्यों को मिला है, बहुत कम राज्यों में पाया है. Illiteracy is found mostly among these states. What is literacy and illiteracy? Literacy means शिक्षित और illiterate मतलब अशिक्षित. अब हमारे लिटरेसी और इलिटरेसी की परिभाषा क्या? शिक्षित होना मतलब क्या? 12वीं पास होना तभी शिक्षित कहलाएगा? 10वीं पास होना तभी शिक्षित कहलाएगा? या कॉलेज पास होना तभी शिक्षित कहलाएगा? Please note that literacy in India means what? Literacy in India means reading, writing and arithmetic. इसको शॉर्ट में कहते हैं 3R और नीचे छोटा S यानी बहुवचन में 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. जिसको पढ़ना लिखना आ जाए, जिसको पढ़ना आ जाए, जिसको लिखना आ जाए और जिसको अरिथमेटिक यानी आधारभूत गणित आ जाए वह कहलाता है लिटरेट. इसका जो प्रतिशत है लगभग पूरा हमारे यहाँ के कुछ राज्यों ने पा लिया है. But most of the states in India are still illiterate, and a good section among the old sections of society is not complete. How can the youth, now the question is, what can the youth do to spread literacy in society? सोसाइटी में लिटरेसी को फैलाने के लिए यूथ क्या कर सकता है? यूथ यानी जवान लोग क्या कर सकते हैं? ये एक सवाल है. और फिर क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑफ अबाउट 200 वर्ड्स ऑन. टाइटल इज गिवन रोल ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट यानी यूथ कम्युनिटी का एक वर्ग है स्टूडेंट्स आर ऑल यंग. So as a student, what role can you play in eradicating illiteracy? To eradicate मतलब समाप्त करना, हटाना, आमूल चूल रूप से हटा देना. Eradicate a disease, एक बीमारी को समाप्त कर देना. From India, polio has been eradicated. पोलियो एक बीमारी होती है, आप जानते हैं. वो बीमारी भारत से पूरी तरह हटा दी गई है. We have not totally eradicated smallpox from India. तो eradicate मतलब हटाना, समाप्त करना. So role of a student in eradicating illiteracy, that is our topic. That is the title as given by the examiner. Now you have to write an article on this. You are Praveen Ojha. आपका नाम भी दे दिया. मैंने जैसा बताया आप क्या हैं? यू आर प्रवीण ओझा. अब देखिए इन विजुअल आपको ये देखना है कि विजुअल में इनपुट क्या है. जैसा वर्बल में आपको 4 इनपुट और 6 इनपुट मिला था, विजुअल में यहाँ पर कोई ऐसा इनपुट नहीं है. विजुअल इनपुट है, वर्बल इनपुट नहीं है. देयर इज नो वर्बल इनपुट. विजुअल इनपुट इज गिवन. And what is given in the picture? A man standing, surrounded by students, sitting on the floor in front of what looks like a school building.
एक स्कूल बिल्डिंग जैसा दिखाई देता है, उसके सामने वो खड़ा हुआ है और उसके हाथ में किताब है और ये स्टूडेंट लोग उसको सुन रहे हैं, बस दैट्स ऑल। और इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट का क्या रोल होगा इलिटरेसी को हटाने में। एंड सो व्हाट कैन वी राइट, हमारे पास क्या नॉलेज है इलिटरेसी या लिटरेसी के बारे में, हम क्या जानते हैं। पहली बात तो उसने कहा है कि इंडिया वी हैव नॉट बीन एबल टू रिमूव इलिटरेसी, टोटल लिटरेसी हमारे यहाँ नहीं आई है, यानी अभी तक 100% लोग रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक नहीं समझ पाए हैं। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि लिटरेसी मीन्स व्हाट, जैसा मैंने बताया रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक। In 1947 what was the figure and today it is what? Definitely the situation has improved over the years, but still we are miles away from total literacy. We are far behind in total literacy. We have to do quite a lot in this field, and because we have to do quite a lot, we can play a very significant role in this context. हम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैसे निभा सकते हैं कहना सरल है, but how can we do that? Firstly, how can we promote literacy? During summer vacation, we can hold literacy classes. कहाँ? Not in schools. स्कूल में तो जो आते हैं तो पढ़ने आते ही हैं, but we can hold these classes in slum areas, in interior villages, and at those places where there are small groups of people, village poor people living. If you go to Calcutta, Calcutta New Market, नया बाजार जिसको बोलते हैं, और if you go to Connaught Place in Delhi, तो Connaught Place और नया बाजार की बिल्डिंग को आप देखिए तो सुबह 5 बजे उसके जो चारों तरफ का बरामदा है वो बरामदा खाली रहता है, क्योंकि दुकानें 11 बजे खुलती हैं या 10 बजे खुलती हैं। तो 5 बजे से 10 बजे तक इतने बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कनॉट प्लेस का और नया बाज़ार का, उसका जो बहुत बड़ा बरामदा है आप देख रहे हैं वो खाली रहता है। मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेटेड फैमिलीज, they go there with a white board, with a marker pen and with a board stand, etc. वो चले जाते हैं और एक दुकान के सामने जिसका शटर गिरा हुआ है वहाँ पे ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं। और जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते वो वहाँ आकर बैठते हैं, कभी 10 कभी 15, और उसके बाद 2 घंटे तक वो बच्चे पढ़ाते हैं। चिल्ड्रन who are studying quality education, who are literate, who are well read, they are providing basic literacy to illiterate people every day in the morning, particularly on Saturday or Sunday. खासकर सप्ताह में 2 दिन तो ये बच्चे जाते हैं और ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों को और बड़ों को भी, ये जो क्लासेस चलती हैं ये बच्चों के लिए कम हैं। स्लम मतलब क्या होता है? स्लम मतलब SLUM, स्लम मतलब ऐसा गंदा क्षेत्र जहाँ पर लोग रहते हैं, गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, बहुत भीड़ लगा के छोटी छोटी झुग्गी झुपड़ियों का जो भंडार लगा रहता है उसे स्लम कहते हैं। स्लम में रहने वाले बड़े बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, पुरुष को वहाँ पर बुलाते हैं और उनको बैठाते हैं और उनको रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक सिखाते हैं। अ ब स ड ABCD और 1 2 3 4 आदि उनको सिखाया जाता। कैन वी डू दैट? यदि कलकत्ता, बॉम्बे और इन जगहों में ऐसा हो रहा है। इन असम क्लास 6, 7, 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स were seen by me giving such kind of lectures or taking such kind of classes on weekends, on holidays and full of summer, expecting no money in return. उसके बदले ये 6वीं 7वीं 8वीं के अच्छे बच्चे किसी पैसे की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें उनको जो संतुष्टि मिल रही थी that was eye opening. So you have to mention these examples and you have to mention that effort can be made by you all in promoting literacy all across. And literacy
among aged people, literacy among village women, literacy among village farmers and such communities who are absolutely, जिसको हम कहते हैं अंगूठा छाप, they don't know. They just use their fingers. They can't read one line. They can't read one word. So helping out such, how you as a student can help in this. So you can play a very important role in summer vacation by taking classes in slums, Jhuggi Jhopdi and all that. These classes are normally held either very early morning. कब होगी ये classes? Either you take the classes very early morning or maybe in the evening after all these people who are illiterate are free from their routine work, from their salary. जो रोज के जो मजदूर होते हैं, जो मकान बनाने में, सड़क बनाने में, अन्य ऐसे कार्यों में, नहर खोदने में, इनमें लगे रहते हैं, ये लोग अशिक्षित हैं. ये लोग शाम को कुछ समय के लिए ज़रूर समय देते हैं यदि उनको सही प्रेरणा दी जाए तो. At the same time, you can also take classes for children of such families who are usually available in daytime as they go to earn their wages. Wages मतलब अपनी कमाई के लिए जब जाते हैं, वहाँ से वापस आने के बाद या कमाई पर जाने के पहले सुबह सुबह इनकी क्लास ले लिया. So that way you can contribute. Not only can you can write in your article that literacy can be increased, improved upon by imparting skills also. To impart means to give. To impart means to give. To give knowledge, impart education, impart learning, impart skills. So we can also impart some kind of skills through songs, through slogans, and also teach them values of small family, health, hygiene, etc. लिटरेसी का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम केवल 3R पढ़ा के रुक जाएं. हम वहाँ पर उनको छोटी फैमिली के फ़ायदे, हाइजीन के फ़ायदे, हाइजीन मतलब स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, सफाई, हाइजीन मीन्स सफाई. देखिए स्पेलिंग क्या है, HYGIENE, हाइजीन. और स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए क्या ज़रूरी है, हाथ कैसे धोना है, ब्रश कैसे करना है, शरीर की सफाई कैसे करनी है, स्नान आदि के तरीके, और ये सब बातों को हम उनको बार बार पढ़ा सकते हैं. So in other words, these literacy classes will not only help in improving the literacy, but it will also help in improving your own personal hygiene, their health, and so on and so forth. We can motivate them not to go for drinking liquor. We can motivate them not to go for tobacco by highlighting the bad features of these things. इसकी जो बुराइयां हैं, evils of drinking, evils of tobacco taking, evils of smoking, etc. They can be highlighted. We can motivate them. ऐसे ही बहुत से जो social evils हैं, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं उनसे. We can also talk to them by social evil like child marriage, बाल विवाह, जो गांव में आज भी बहुत जगह चल रहा है. We can also talk to them about a caste system, which is a bad thing, and as I said about drinking, etc. And we can help remove such bad things from the minds of these poor people, from the minds of these lowly placed people, lowly placed in the society. lowly placed, समाज की नज़र में जो नीचे हैं, नीचे तबके के लोगों में जो ये बुराइयां हैं, उनको हटानी. Those who are living in slum, we can tell them how to keep their own house in order. सफाई कैसे रखें, स्लम में रहते हुए भी सफाई हो सकती है. Today if you go to some villages, some of the villages you will find are so clean that they are much cleaner than the cities and towns, because the village people themselves have taken the pain of keeping their own village clean. गांव के लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, महिलाओं ने, स्वयं ने
अपनी मेहनत से कुछ अपने गांव को इतना सुंदर साफ बनाया है कि दे आर एग्जाम्पल्स in India. So can we not motivate? So this way we can play the role of eradicating not only illiteracy but also many social evils in our society. बाद में यदि हम सरकार से, शिक्षा विभाग से, at some stage if we talk to the education department, we can make sure that we allow them, we create situation, we create a scope for them to appear in examination. क्लास 3 का एग्ज़ाम, क्लास 4 का एग्ज़ाम, फिर क्लास 5 का एग्ज़ाम, ऐसा करते करते क्लास 8 तक गांव वाले पढ़ लें तो बहुत फ़ायदा होगा। इलिटरेसी काफ़ी कुछ कम होगी और अशिक्षित आदमी जितना समाज के लिए खतरा होता है उससे ज़्यादा खतरा दूसरी चीज़ नहीं है। एक शिक्षित आदमी, एजुकेटेड मैन, makes many generations, and uneducated man spoils many generations. एक अशिक्षित आदमी के यदि 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को अशिक्षित रख रहा है और वो 4 बच्चे बड़े होते हैं तो उनका अपना परिवार बनता है। सोचिए एक आदमी से 10-15 लोगों का परिवार बना और वो सब अशिक्षित, क्या करेंगे समाज में? So we have to make sure as a student we can play the role of connecting the villagers with education department, looking for ways to allow them to appear for examination and make them neo-literate, नए literate, इनको कहते हैं neo-literate, and thus they can become middle class pass, primary class pass. They can also remove many of these evils. Similarly, these students can also help. As a student, you can also help not only in eradicating illiteracy, not only removing many of the evils, social evils, as I discussed, but at the same time, you are also channelizing their mind to constructive things. Third way in which you can play very important role is, आप इनका जो दिमाग है गांव वालों का, इनको कंस्ट्रक्टिव अच्छे काम की ओर लगा रहे हो। यदि ये लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छी बातें आपसे सीखेंगे, अच्छे वैल्यूज सीखेंगे, तो इनके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, अपराध कम होंगे, चोरी चपाटी कम होगी, गलत काम कम होंगे और इनके पास समय नहीं रहेगा दूसरे फालतू काम करने का, फालतू बात सोचने का। They will not be into drinking, they will not be into stealing, they will not be into foul language, they will not be into all kind of marpeet and so on and so forth. They will not be fighting with each other. They will be peace-loving people, enjoying their evening in beautiful classrooms under your care. So we can also write that point, that role of the student can be manifold. As a student, we can play many crucial role in diverting their energy and also channelizing their energy to constructive activities. Constructive, destructive नहीं, तोड़ फोड़ का दिमाग नहीं, जोड़ने का दिमाग, ऐसा दिमाग जो जोड़े, पॉजिटिव चीज आए. So we can, that is how this article now, which is based on visual, so we can say that through this input we can make out that he intends to promote students' involvement in eradicating illiteracy, and the title is Role of a Student in Eradicating Illiteracy. Right? Now, here I just read one question and I leave it to you the answer. What is the question? That's again a visual. And this question is again taken from the past examples that may be given in your book. And the question is, just read it. Increase in the number of private vehicles has caused problems like rising accidents,
traffic jams, lack of parking space, road rage, etc. आप समझ गए कि टॉपिक क्या है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स पर है, टॉपिक इज ऑन द व्हीकल, इनकी बढ़ती संख्या, और इनकी बढ़ती संख्या से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं. So some of the problems is mentioned in the question itself. It causes accidents, traffic jams, lack of space, parking space, road rage, lot of expenses on fuel, pollution, etc. Now what is the solution? The question is, the solution to this is the use of public transport. The examiner himself is giving solution, and he says the use of public transport like buses, metro tram, share auto, share taxis can solve many of these problems. So the question is, write an article in about 120 to 150 words on importance of public transport. So what is the title of the article? Importance of public transport. So you have to mention what is transport. You have also to mention why the types of transport, public and private. You also have to mention the impact of large transport, large number of vehicles. Thereafter you have to say how can large number of vehicles be avoided. And by avoiding large number of vehicles on the roads, we are saving ourselves from these problems. The last point is, how can we avoid use of so many vehicles on the road? By public transport. Give examples of public transport. Delhi Metro is one of the best examples of public transport which is being used by lakhs of people. दिल्ली में मेट्रो ट्रेन आने के पहले जो नौकरी पेशा व्यापारी काम करने वाले लोग थे, उनको 10-10, 20-20 किलोमीटर जाना होता था, तो they used to go by their own vehicle, spending so much money, causing so much pollution, so much jam, so many accidents and what not, and traffic, load of traffic on the road. Now with metro coming, quite an improvement on the traffic situation in Delhi. अब लाखों लोग ट्रेन से जाते आते हैं और समय बचता है. यदि वो अपनी कार से जाते थे तो जहाँ 1.5 घंटा लगता था, वहाँ मेट्रो से उसी जगह को जाने में 20 मिनट लगता है. So these are the advantages. Now I will not explain, or I will not write an article for you. It is for you to write an article on this and start doing exercises. This is just a hint to you that the article is about public transport and its benefits. उसके फायदे क्या हैं.